So children, in the last class, we discussed the general characteristics of Thallophyta, that is algae. Thallophytes include both two groups, algae and fungi. Fungi are also included in Thallophyta. Why? Because they also have a thallus-like body. But see, it depends on which classification we are studying. When we are studying Bentham and Hooker, it's a classification of plant kingdom. So that's why here in Thallophyta we are discussing about algae. But again, let me explain, tell you that algae and fungi both are thallophytes. Okay. So these are the common characteristic features of algae. They are chlorophyll bearing. Body is very simple. This you have to keep in mind that among the plant kingdom, thallophytes or algae have the simplest body form. Okay, and that's why they are known as the primitive plants. All other divisions, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm has evolved from these thallophytes. Body is thalloid. Thalloid means it develops, it grows in all the directions along with the surface. कोई proper shape नहीं होता है. ये किसी भी shape में grow कर सकते हैं. That's why they are known as thalloid. Autotrophic, but obvious है because they belong to plant kingdom, they will be autotrophic. And largely aquatic. Again, children, I'm telling you that life originated in water. So the first plant also originated in water. First plant means these thallophytes or the algae. So afterwards, few algae they start growing in some other plant parts also, but they need water to complete their life cycle and for their survival. So majorly they are aquatic. They are found in freshwater ponds, lakes, rivers, or oceans also. In the last class also, I told you that in oceans and in seas, the chief producers, the chief photosynthetic organisms which are found in oceans and seas are algae. अच्छा बताओ कितने लोगों ने वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं जिसमें आपने अंडर वाटर स्टंट्स देखे हैं या अंडर वाटर प्लांट्स देखे हैं? देखा है? यस मैम. तो वो जो बड़े बड़े लंबे लंबे जाइंट प्लांट्स होते हैं जिसके बीच बीच में बहुत सारी फिशेस, इनफैक्ट जो भी डाइवर्स होते हैं वो डाइवर्स जो उसके बीच बीच में से निकलते हैं, वो बड़े बड़े प्लांट्स भी एल्गी का ही फॉर्म है. ओके, they are a group, they are the plants of rhodophyceae and phaeophyceae. So algae is a group which has small unicellular organisms to the giant kelps. बड़े बड़े जो प्लांट्स ओशियंस में होते हैं सभी रेंजेस में ये पाए जाते हैं. कोलोनियल फॉर्म, कोलोनियल का मतलब है जहां पे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एल्गी एक साथ रहती है. They are unicellular, they are independent in all the functioning. लेकिन केवल रहने के लिए वो एक साथ रहते हैं, एक साथ वो स्विम करते हैं, तो they resemble as a single structure. For example, here, see this diagram, volvox. In this volvox, each these green cells are one cell, one single organism, but they are intermingled in such a shape, a ball shape ये बना लेते हैं that they look like a single organism. Okay. तो कॉलोनियल एल्गी भी होती है. सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल एल्गी, देन ब्रांच्ड, कारा. सो ये सब जो है आपके एल्गी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. रिप्रोडक्शन, ऑल थ्री फॉर्म्स आर देयर. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर all the three types, all the three groups of algae can be differentiated. So asexual reproduction भी होता है by spore formation, and sexual reproduction also takes place by fusion of gametes. So this is a revision of what we have already done. Now let's see the classification. Algae are classified in three groups: chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. And as the color resembles here, chlorophyceae are which color? Green. Green in color. Phaeophyceae? Yellow. Brown. Brown. And rhodophyceae are Red. in color. Other children, you also can speak. बाकी लोग भी बोल सकते हो.
So algae are algae are classified into majorly three groups: chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. So let's start with the chlorophyceae. Chlorophyceae. Phyceae word is a suffix or prefix of algae. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. इनफैक्ट इन लास्ट वीडियो ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन स्टडी ऑफ algae is known as फाइकोलॉजी. तो फाइको टर्म, फाइसी टर्म, ये जहां पर भी आएगा या तो सफिक्स के फॉर्म में या प्रीफिक्स के फॉर्म में, सो यू कैन रिलेट दैट इट related with the algae. So chlorophycean are commonly known as green algae. Now because they are green algae, they have both the green colored pigment, chlorophyll A and chlorophyll B. So इनमें chlorophyll A और chlorophyll B pigment होता है. Cell wall is made up of mainly cellulose. Cellulosic cell wall is there. Very interesting thing here that they have a chloroplast which is of different shapes. Chloroplast is of different shapes. देखो अभी तक जब आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास 9th में क्लोरोप्लास्ट का शेप, तो आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट इस तरह का एक बॉडी होती है. बट क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट कैन बी staircase like structure like this. Chloroplast can be a ribbon shaped structure. It can be a cup shaped structure. It can be round structure like this. So in chlorophyceae, chloroplast are of different shapes. बहुत सारे different shapes के ये आपको मिलेंगे. और क्या काम होगा, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? Children, very simple questions I'm asking. Kindly unmute and answer quickly. What is the function of chloroplast? Ma'am, Yes. Hello. What happened? नित्युंजय, चलो मैं ही बताती हूँ. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं. क्या ये आपको नहीं पता था या पता था और याद नहीं है? Chloroplasts perform photosynthesis. Okay, so these are the different shapes of chloroplast. अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है. So this chlorophyll A and chlorophyll B pigment, they are found inside the chloroplast. Okay, and chloroplast produces starch. खाना बनाएगा ना फोटोसिंथेसिस के बाद. That starch or the oil droplets are stored in a special storage body known as pyrenoids. So ये ऐसे छोटे छोटे स्टार शेप्ड के यानी इस तरह से divided structures, they are found inside the chloroplast and their function is to store food material. Okay, so pyrenoids are there to store food material. And in which form the food material is stored? Food material is stored in the form of Starch. or oil droplets. So they store food in the form of oil droplets or in the form of starch. Now coming to the reproduction, yes, again they reproduces by all the three means. One is vegetative, propagation, asexual and Asexual. sexual. very good, asexual and sexual. See, अगर आप लोग ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हो, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल एंड आल्सो इट्स रिटन इन द स्लाइड. यू ऑल कैन सी द स्लाइड. Okay, so the class should be interactive one. So 3 methods of reproduction: vegetative, sexual and asexual. And as I told you in the last class that they are classified based on the color. Obviously pigment और color के basis पे इनको हम अलग-अलग किए हैं 3 groups में, and their asexual spores. So here in chlorophyceae, the asexual reproduction takes place by zoospores, flagellated spores. This kind of algae is there and they have flagella. 2 flagella will be there which are present in the apex tip पर present है.
apical flagella, and both the flagella are similar in size. So two equal apical flagella, which is produced in a zoosporangia. So when spores are produced, the structure is known as zoosporangia. Like this is zoosporangia. Inside this zoosporangia, many zoospores are produced. Then they come out and develop into a new algae. Okay, so that is how they reproduce asexually. Now coming to the sexual reproduction, in green algae, in chlorophyce, all the three type of sexual reproduction is found. Like it may be isogamous. Isogamous means suppose they are producing two zoospores, male and female. But because they are similar in size, similar in appearance, so we cannot differentiate which one is male, which one is female. So it is known as isogamous. This one, isogamous. Maybe two of the same shape, but the size is different. Suppose this is one, and second is also motile, but size is different. Then it is known as anisogamous. And third one is oogamous. In oogamous, there will be one small motile male gamete and another one big non-motile female gamete. Okay, so that is a oogamous type of sexual reproduction. So for sexual reproduction, there will be a male part, there will be a female part. Part I am telling, not organism. एक ही body में normally male और female part बनता है. Male part के अंदर में male gametes बनेगा, female part के अंदर में female gamete बनेगा. Then they get fused to form zygote. Then that zygote divides by meiosis and produces many spores. Those spores develop into new algae. So this is how they reproduce sexually. Some examples I have written: Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Cara. These are some of the examples of green algae. Here are the diagrams of some green algae: Volvox, Chlamydomonas, and Cara. See, in this diagram, in this Cara, let me explain you. In this Cara, in one branch, male anthrozoids are produced, and in another branch, female gametes are produced. So this is a female gamete producing part, Archegonium, and this is a male producing part, Anthridium, and Anthridium. तो अभी नाम आपको नहीं जानना है, नाम आगे आपको आएगा, नेक्स्ट क्लास 12th में आप पढ़ेंगे. एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम, अभी ब्रायोफाइट्स में भी ये चीज आएगी. सो कारा में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, बोथ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड. सो दिस इज अबाउट chlorophyce. Now let's go for the next division, that is Phaeophyce. Phaeophyce, which are brown in color. Now brown color के हैं, that means they must have some pigment, some coloring substance which is brown in color. देखो जब chlorophyll A और chlorophyll B था तो वो green color के pigments हैं. Chlorophyll A is a dark green colored pigment and chlorophyll B is a light green colored pigment. चिल्ड्रन एक चीज इसको यहाँ पे और भी एक्सप्लेन करूं. प्लांट्स में भी देखो, आप प्लांट्स में जब देखते हो कि जब बिल्कुल पुरानी पत्तियां हो गई तो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है. जो नई पत्तियां आती हैं, नई लीव्स डेवलप होती हैं, दे आर लाइट ग्रीन इन कलर. एंड इवन इन द सेम प्लांट यू कैन सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन. एक ही प्लांट में अलग अलग लीव्स के शेड्स अलग अलग होते हैं. And these shades, these colors are because of the presence of pigments, coloring pigments, photosynthetic pigments. So majorly they have chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene. जो higher plants हैं, Brio, Pteridoi, Angio, Gymno, इनमें ये चार major pigments होते हैं. Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll is yellow colored, is a group of yellow colored pigments, xanthophyll. And carotene is a orange colored pigments. और जब ये सारे pigments अलग अलग shades में, अलग अलग composition में एक दूसरे से मिलते हैं, then they provide different colors to the leaves. Here in algae, you find algae are found in all the possible colors. यहाँ हम लोग इसको एक
broadly categorization किए हैं into phaeophyceae, rhodophyceae and chlorophyceae. But एल्गी आपको हर कलर के मिलते हैं. गोल्डन एल्गी भी है, सिल्वर एल्गी भी है, ब्लैक एल्गी भी है, ब्लू एल्गी भी है, बहुत सारे, आई मीन ऑल, पर्पल भी है, हर कलर के एल्गी होते हैं. अच्छा, आप में से किसी ने रेड सी के बारे में सुना है? रेड सी. Yes, ma'am. Red sea is red in color because of the presence of red algae. Okay, तो वो रेड एल्गी इतने सारे वहां पर ग्रो करते हैं कि उसका पूरा वाटर का कलर ही अपीयर करता है लाइक अ रेड कलर. ओके, Phaeophyceae, they are brown algae, and for producing brown color, they have chlorophyll A, chlorophyll C, and fucoxanthin. This is a brown colored pigment, fucoxanthin. In cell wall, along with the cellulose. Cellulose देखो chlorophyceae में भी था. They have cellulose, and along with that there is another carbohydrate, that is algin. So cell wall contains cellulose and algin. Food is stored as a complex carbohydrate, like in chlorophyceae it is a starch or oil. Here it is a different form of starch which is known as laminarin or mannitol. Laminarin or mannitol, it is a type of carbohydrate. You have to learn these names. So food is stored. अब देखो यहाँ पर पायरिनॉइड नहीं होता है. पायरिनॉइड केवल क्लोरोफाइसी में पाया गया है. फियोफाइसी और रोडोफाइसी में पायरिनॉइड्स नहीं होते हैं. Okay, vegetative reproduction here again also takes place by the process of fragmentation. Asexual reproduction by biflagellated zoospores. देखो इसमें भी zoospores बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर का स्ट्रक्चर है, it is like this, and spores are not produced on the tip, they are produced on the lateral surface, and they are of two different size. See, two unequal laterally arranged attached flagella are there, and shape is pear shape. This is the pear shape. मैंने क्लोरोफाइसी में बताया था ये शेप, यहाँ पर मैं बता रही हूँ pear shape or kidney shaped structure is there, and it is a unequal flagella which is present on the lateral shape, lateral position. Sexual reproduction again can be of any three types. Out of three types, isogamous, anisogamous or oogamous, कोई भी हो सकता है. And examples here is ectocarpus. I'm emphasizing on the pronunciation so that you all can learn, revise it. Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus. और एक चीज और ध्यान देना, because they all are scientific names, so they are written in italics. When printed, they are written in italics, and when you have to write, you have to underline all these names. So that's about the Phaeophyceae. Then the diagrams. See, these are the examples: Laminaria, Fucus, and Dictyota. One more thing. These Phaeophyceae, they are large in size and generally marine algae. Okay, and their body is divided into three parts. Body is branched. बड़े बड़े लंबे लंबे algae होती हैं. Body is divided into three parts. One is the holdfast, which is attached to the substratum. जो भी soil है नीचे में, पानी के नीचे में, वहां पर ये attached होता है. Stem-like structure known as stipe, and leaf-like structure known as frond. देखो यहाँ लीफ लाइक बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ लीफ. सेम स्ट्रक्चर, सेम पैरेन्काइमेटस सेल्स पूरे में पाई जाएंगी एक जैसी ही, लेकिन इनका शेप बाहर से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गया है. तो इनमें तीन पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं: होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. दे आर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, going to the third group of algae, Rhodophyceae. So Rhodophyceae are red algae, and they are all marine algae. They are found only in the oceans. Red pigment इनके पास है phycoerythrin. So along with chlorophyll A, they have chlorophyll B and phycoerythrin. Cell wall also is made up of cellulose, and along with that pectin and polysulfate esters.
they are also get deposited in the cellulose. Food is stored in the form of starch, but again it is a type of starch. It is a different type of starch known as Floridian starch, and this Floridian starch is similar to more of the amylopectin and glycogen. Now amylopectin word तो बिल्कुल नया होगा आपके लिए, so अभी जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स तो वहां पर पढ़ेंगे कि amylopectin क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है. ग्लाइकोजन आपने पढ़ा है. ग्लाइकोजन animals में food is stored in the form of glycogen. So glycogen is again a different type of carbohydrate. So stored हो रहा है carbohydrate की form में, but carbohydrate के अलग अलग forms हैं सब में. That's why in chlorophyce तो normal starch is there. In phaeophyce it is laminarin or mannitol. In rhodophyce it is Floridian starch. Okay. Reproduction, they reproduces vegetatively by fragmentation, यानी कि fragmentation is common in all three. Asexual reproduction by non-motile spores. देखो अब यहाँ पर difference आ गया ना. Chlorophyce में क्या था? Chlorophyce में spores apex पर थे. इसमें spores lateral थे और दो अलग अलग different size के थे, एक बड़ा था एक छोटा था in phaeophyce. और यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, यानी कि फ्लैजेला है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा. सो रोडोफाइसी में जो स्पोर्स बनते हैं फॉर वेजिटेटिव फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर नॉन फ्लैजेलेटेड. तो वो पानी के साथ पैसिवली फ्लो करेंगे, खुद से फ्लैजेला नहीं है कि वो खुद से स्विम कर सके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. सी इन एल्गी अगर हम देखें तो क्लोरोफाइसी ज्यादा सिंपल होते हैं देन द फियोफाइसी एंड देन द रोडोफाइसी. तो रोडोफाइसी की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और इट इज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें हमेशा एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट बनेगा और एक मोटाइल मेल गैमीट बनेगा एंड देन फ्यूजन टेक्स प्लेस. एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे मिस हो गए हैं, नीचे छुप गए हैं. चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल्स तो वी कैन सी in the next diagram also. So the examples are, see so many examples. Gracilaria, आपने Gelidium and Gracilaria पढ़ा है. Gelidium and Gracilaria provides agar-agar, Porphyra, Thoria, Seramium, Corallina, Champia. These all are the examples of Rhodophyce algae. So children, that's all about classification of algae. Now go through the NCERT, and there is a chart given in NCERT. Let me share that chart also and let's discuss. Here is a chart of comparison. See, Chlorophyce green algae, brown Phaeophyce brown algae, Rhodophyce red algae. Then pigments A and B, chlorophyll A, C and fucoxanthin, chlorophyll A, D and phycoerythrin. So ये आपका एक कंपैरेटिव चार्ट एक साथ में दे दिया है. अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन करना या डिवीजन करना इजी हो जाएगा. ओके, so that's all from my side about the algae. Now it's your turn to read, to go through the this NCERT and ask if you have any query.